Now would like to invite our dinner speaker, Dr. Jitendra Kapadia, Roto Guru, Master in Polymer Science, PhD, Rotational Molding from ICT, former UD City, Vatunga, Mumbai. Dr. Jitendra Kapadia is a chemical engineer with a master's in polymer processing and a PhD in rotomolding from ICT, Mumbai. During 11 years of Reliance Spark, he led major advancement in rotomolding, including process optimization, polymer modification, aluminum tooling, and additive system tailored for Indian conditions. He also developed foaming and cross-linking compounds, specialized polyolefin resins for anti-static and high abrasion performance, and introduced plastisol and polypropylene grades for rotomolding. He has held leadership roles at SIBA, BASF, and Henkel, overseeing technical centers, regional product development, business verticals, and strategic projects. Dr. Kapadia now leads public affairs and business relations at Henkel India, shaping the PAG landscape, strengthening corporate reputation, and driving advocacy across policy and industry platforms. His passion for rotomolding continues to guide his contribution to innovation and industry development over 28 years. So, ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Dr. Jitendra Kapadia. So guys, don't worry, I'll not use the slider. So there won't be any slides from my side. In fact, first of all, before I could start, it's a dinner speech. So I'll make sure that I don't keep you away from the dinner and the cocktails for long. Firstly, thank you to the association. I think it's really the Roto Mitra for getting us all on this platform. I think it's a wonderful thing to be on this platform. I think that's one of the most important thing. It's really more than having presentations and what you're speaking. It's more of the networking that we have together, exchange of ideas, what type of problems we have got. So just to start off, I think I'm in a generation where I've got kids who happen to be from a very popular age gap or a generation. You call it the Gen Z. So I think many people of you might be knowing about it. And what is your experience about Gen Z people? What do you feel about Gen Zs? Any idea, any views that you would like to say about anyone who's interacted with Gen Z crowd? Anyone would like to say? They are surely different. They are surely different. And in fact, I was speaking to one of those Gen Zs, and he was on the panel discussing with me, and I said, everyone was introducing each other and saying, I am Jitendra Kapadia and I've been in this company. And so it's very conventional type of introduction that we always did. And this person, he said, passion, so-and-so, work, so-and-so, education, so-and-so. And he just sat down. I really liked the way he introduced himself. It actually described him so well and so effective. More than me saying, going through all this and saying, अरे मैं ये कर रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं ये company में बड़े-बड़े post पे काम किया. It's very clear. And for me also, I would love to introduce myself in that way, saying that what is your education in, or I would say, what is your passion? Everyone's been hearing it, and literally that's been my passion. And mainly because I feel rotomolding process is a very challenging process, from injection molding, blow molding, extrusion, thermoforming, because that's where you have a lot of pressures and things that really push the polymer into making that desired form. Rotomolding is something you really need to play around. It's a skill more than actually a process. And that's something which fascinated me a lot, and that got my interest right from the beginning. And that's where, I don't know it's the right thing to do, because I could be one of those very few, Danu might confirm, one of those few people who have done actual research and PhD in the subject of rotomolding, on immiscible blends on rotomolding. So I think that was, so when you talk of passion, it's rotomolding. And then what did you educate? So then you say, then what do you work on? So when you say passion, it's rotomolding. And then you say, what is your work with Reliance from 1997 to 2007? Again, work was also rotomolding. I think mainly it was rotomolding. And then what is your education? Again, it was rotomolding. So I think that was one where I said, oh, it's so funny that if you like to say something and describe myself,
In that particular time period, it was passion, work, education, everything rotomolding. So you can imagine, so that was something where you could describe me. Then I moved on to different companies, as you can see. And these were again connecting to rotomolding in some way or the other. At Ciba Specialty Chemicals, we worked on a bubble densifying or a cycled speeding additive where we worked on it. I think quite a little. I think Reliance and many other raw material suppliers have also implemented that, where you have a fast densifying additive that is produced. Again, going to Henkel, I've been talking about different type of adhesives that we make. This again could resolve or solve partly topics and questions or problems that rotomolding industries have, which I am aware of, I was aware that time, was the actual bonding between a non-polar polyethylene material and polyurethane material, which are used for pallets, which are used for, you can say, for insulated containers. With time, with the thermal cycle, there is always differential thermal coefficient of expansion, because of which they delaminate. Performance, mechanical performance, thermal insulation performance goes down. So that's where we have adhesives, water-based adhesives, and I would really like to try this out with our rotomolder friends. So that's again connecting to rotomolding. And then obviously my job today was to, as Manoj ji just mentioned, listen to the rotomolding friends today. Just listen to them and give your reflection. What do you feel about it? So I'm really happy to see that we have really graduated. We have graduated a lot to really moving in, not only understanding what is rotomolding, but we are now talking of much more. We are talking of tools, we are talking of designs, we are talking of different type of materials. So we have graduated a lot. So I just like to throw a question to all of you all. In the whole process, as we are discussing, everyone discussed on molds and materials and process control. Blaise really emphasized a lot on process control. What could be the most important step in the rotomolding process, right from selecting the right raw material, pulverizing it in the right way, having the right product, then actually making a nice mold, processing in the best way, and then obviously packing in the right way to dispose it to our end user. Can anyone tell me what could be the most important process? Okay, anyone else? Just think about it. What could be that could be really deciding the quality of your end product or the end user? Okay, what else? I think it's everything put together. Just leave out one of them and your product is going to fall. Just think of it. You have done everything right, but you have not selected the right polyethylene grade. You'll mess up in a big way, and you should not know what will happen. The product might shrink, the product might get stuck to your mold, you might not get consistent dimensions. All these things will not be in place. All these processes, right from deciding on the raw material. I don't want to get very serious just before dinner, but please understand, it's just a topic which I wanted to share with you, saying it's going to be most important to understand what material I'm using. Don't get into a little bogged down into hexene, octene. These are very much there, which we are using co-monomers to make polyethylene polymerization. Yeah. Sorry? अरे sorry, चुकलं, sorry. Okay, हिंदीत बोलतो, मराठीत बोलतो. हां, सॉरी जर चुकलो मी, ते काय MNC मध्ये असल्यामुळे ना, त्याच्यामुळे मला ती वाईट सवय लागलेली आहे. सॉरी. आता हिंदीत बोलतो. ओके, मी काय म्हणतोय, प्रोसेसमध्ये रोटोमोल्डिंग प्रोसेस, हिंदी. रोटोमोल्डिंग प्रोसेस में हमको ये देखना होता है कि क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है? हम लोग ऑलवेज सोचते कि अरे मैंने मटेरियल तो अब महंगा वाला लिया है, मैंने यूवी स्टेबलाइजर डाला हुआ मटेरियल लिया है, मेरे को किसी चीज़ की चिंता नहीं है, मेरे को क्या प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मटेरियल ऐसा चमक के बाहर आएगा, मैंने टूल इतना अच्छा पैसा डाला है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने प्रोसेसिंग का बहुत कंट्रोल किया है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. वो प्रॉब्लम नहीं है. ईच एंड एवरी स्टेप, इफ एक स्टेप में आपको पैसा बचाया
तो दूसरे स्टेप में आप वो पैसा भरपाई करेंगे पक्का, क्योंकि जैसे आपने पल्वराइजर अगर सस्ता वाला लिया तो आपका पाउडर बराबर नहीं बनेगा। जनरल इंप्रेशन ऐसा होता है। व्हेन आई एम टचिंग ऑन द टॉपिक ऑफ पाउडर, पाउडर का हम लोग बोलते हैं कि मेरा पल्वराइजर यूनिफॉर्म पाउडर बनाता है। रोटो मोल्डिंग प्रोसेस को यूनिफॉर्म पाउडर नहीं चाहिए, उसको एक ग्रेजुअल पार्टिकल साइज वाला पाउडर चाहिए। बिकॉज अगर आप रोटो मोल्डिंग प्रोसेस को समझे तो वो प्रोसेस ऐसा होता है कि जब मोल्ड हीट होगा तो डेंसिफिकेशन होने के लिए पहला जो एकदम फाइन पाउडर होता है वो मोल्ड को जाके चिपकेगा, उसके बाद उससे कोर्सर मटेरियल चिपकेगा और उसके बाद कोर्स मटेरियल चिपकेगा। ये ग्रेजुअल स्ट्रक्चर में स्टिकिंग ऑफ द मोल्ड होना जरूरी है। तो ये होने के लिए आपको अगर आप बोले तो क्या हुआ, मेरे पास यूनिफॉर्म पाउडर है तो क्या प्रॉब्लम हुआ, तो आप बता सकते हैं प्रॉब्लम क्या होगा। अगर मेरे पास एग्जैक्टली 35 मेश का पाउडर है, हम एकदम सीव करके मैंने लिया, मेरे पास 35 मेश का पाउडर है, तो क्या होगा, it will take much longer time to completely remove out the voids because densification will take much longer time। और वो प्रोसेस आप जब बबल निकालने के प्रयास में लगेंगे तब आप उसको ज़्यादा हीट करेंगे, और हीट करेंगे तो आप वो मटेरियल को जला देंगे, और जलाने के बाद आपका मटेरियल हो जाएगा पापड़। फिर आप पकड़ेंगे रिलायंस को कि आपका मटेरियल टूटता है। सो दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जस्ट एन एग्जांपल, जोक्स अपार्ट, बट एग्जांपल ऐसा है। एनी प्रोसेस, अभी हमने लिया सस्ता वाला मोल्ड तो यार टंकी का मोल्ड है, कोई भी मोल्ड बना के ले लो, किधर से भी बना के, मेरे को सस्ता मोल्ड चाहिए, मेरे को जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट, कोई देखने वाला नहीं है, टंकी जैसा टंकी दिखना चाहिए। जब आप मोल्ड बनाएंगे, सस्ता वाला बनाएंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा, पार्टिंग लाइन पे होगा, डबल गाइडलाइंस गाइड पिंस पे होगा, क्लैंपिंग सिस्टम पे होगा, थिकनेस वेरिएशन, वेल्डिंग वेरिएशंस में होगा, कॉर्नर का फिनिशिंग में होगा, सब जगह पे प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से जब मोल्ड से प्रोडक्ट बाहर निकलेगा तो उसको फिनिशिंग करने में आपका इतना रिसोर्स जाएगा, तो फायदे से ज़्यादा आपका नुकसान होगा वो प्रोडक्ट में। मैं सुन रहा था अब ये डिस्कशन जो हो रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं रोटो मोल्डिंग प्रोसेस की जो बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी है, इफ यू लुक एट ऑल द प्रोसेसेस इन कन्वेंशनल पॉलीमर प्रोसेसिंग में, आप जब भी देखेंगे, इफ यू लुक एट फिल्म ब्लोन फिल्म, सोफिस्टिकेटेड टेट्रापैक लैमिनेट्स जो 3-5 लेयर के बनते हैं, एल्यूमिनियम, पॉलीइथिलीन, highly functional products with nylon and all, those polymers also do not get returns per kg as much as you get in rotomolding. Then why there is a question or discussion going on the rate per liter? Coming again back to the question of Zenzi, the काफ़ी सीखने को मिल रहा है मेरे को। In fact, there's a lot of things that I learned from the Zenzis, yeah. So Zenzis को generally if you see कि हम लोग के बच्चे अभी, both my daughters are Gen Zs, and when they are growing they know a lot of things and they try to tell you how to use the Apple phone, ये एप्लीकेशन, अरे इधर बता, ये ऐसा करके बताते हैं, जो हम लोग 5 मिनट लगाते हैं वो लोग एक बटन दबा के करके देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं अरे आजकल के बच्चे बहुत नॉलेजेबल है, हम लोग उनको चढ़ा रहे। That is why there is also a question of problem that we face. And that is exactly what happens with our rotomolding circuit. Sorry for comparing things, but this is how I compare things. Everyone is talking about tank and other products. Tank or other products. Tank is also a product. It is nothing different. Conventionally हम लोग बना रहे थे, उसलिए उसको टैंक का नाम दे दिया, और बाकी सब लोग फंक्शनल प्रोडक्ट्स। इसमें पैसा आता है, इसमें इंसर्ट जाते हैं, इसमें ये लगता है, उसमें डिजाइनिंग लगता है, उसमें ये जाता है, ये टैंक है बाकी का। टैंक इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। टैंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड इज इंडिया। मैं बोल के थक गया जब मैं बोल रहा था, जब भी फॉरेनर्स आए, अमेरिकन्स आए, दे आर टेलिंग यू समथिंग वेरी गुड विच विल ऑल शुड एब्सॉर्ब। रोटो मोल्डिंग की कैपेबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं,
वो आपको नहीं बोल रहे कि आप नए प्रोडक्ट्स बनाओ. नए प्रोडक्ट जब भी बनाओ जब भी उसकी जरूरत हो, लोकल डिमांड होगी. अभी कैसे, अभी स्लोली वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग दैट ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस. दैट्स वेयर यू नीड टू ग्रो, नीड टू डेवलप इट, नीड टू मेक देम. बट स्ट्रेट अवे टैंक में कब पैसा नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट्स में पैसा है, ये गलत चीज है. वी डू हैव एग्जांपल्स in this room where they have not budged from the pricing of tanks and they are still making money and they have maintained quality and able to do that. Tank is a product, it is a functional product, it is a very sensitive product. वो एक जगह पे रहता है, हम लोग काफी सालों से उसको देखते आए हैं. It's you should understand the history that where tanks really came from and where it happened, what happened to the Indian industry with rotomolding water storage tanks. Conventionally, they were made by a outshoot, or you can say a business diversion from hardware walas. I make pipes, I make taps, I make many other things. I also sell tanks. So let me put a plant of making tanks. Now that was not their core business, but they still start making tanks, and they were meeting to all the requirements. That's where it was just making a product that looked like tanks. There were a lot of flaws that we had. We had inconsistency in wall thicknesses. There were a lot of voids in that. The designs were not there at all. इधर 2 रिब लगाओ, इधर 4 रिब लगाओ, इधर एक राउंडिंग ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा करके खत्म कर दो. That was the design concept we had then, and that is the by impression that rotomolding had back then when we said rotomolding is a cheap process, rotomolding has cheap mold, rotomolding में cheap machine लगते हैं और खाली टंकी बनती है. बाकी लोग ने आके हमको समझा, नहीं भैया टंकी नहीं बनती, बहुत कुछ अलग चीज में बनता है. तो हम लोग सब छोड़ के बाकी चीज में लग गए. बीच में आ गया ब्लो मोल्डिंग. ब्लो मोल्डिंग आया तो सब लोग ने बोला अरे हमारा मार्केट गया, 500,000 लीटर के टैंक तक हम लोग का पूरा गया मार्केट, ब्लो मोल्डिंग ने खा लिया. दैट गिव्स मी एन एग्जांपल ऑफ, हैव यू सीन पिकल बॉल? पिकल बॉल देखा है मेरे? आई हैव गॉट माय कजिन हु इज अ नेशनल लेवल कोच फॉर बैडमिंटन. ही ऑपरेट्स आउट, ही हैज गॉट 2 अकेडमीज इन बॉम्बे, एंड ही सेज अरे जितेंद्र मेरा धंधा गया अभी, ये पिकल बॉल ने वाट लगा दिया. इट रिमाइंडेड मी ऑफ माय रोटोमोल्डिंग फ्रेंड्स हु सेड अरे ये ब्लो मोल्डिंग ने वाट लगा दिया रोटोमोल्डिंग का. दैट वाट लगा दिया, क्यों वाट लगा दिया? यू हैव नॉट प्लेड बाय द स्ट्रेंथ्स ऑफ रोटोमोल्डिंग. Rotomolding has got tremendous strengths. Rotomolding is a designer's paradise. They say that rotomolding is a designer's paradise. Literally can do anything with rotomolding the way you can design it. Put in features that rotomolding cannot do. I mean, blow molding cannot do. Injection molding cannot do. Planters is a growing market. I'm very happy to know that planters is a growing market today. Manoj ji just mentioned about it's growing. Planters are made by injection molding. One major feature that you can really put up is size. I made a big planter which injection molding will find difficulties in making. They have to really go into a high clamping machine. So yes, that's an advantage. But what are the other design features that you can put in rotomolding which injection or blow cannot do? You can play around with that. You put self-watering, different design plants that can go into balconies. Something that can be only done by rotomolding. Next topic when I'm discussing comes designing. We always feel अच्छा अभी हम लोग को डिजाइन करना है. अच्छा ये बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कॉन्फ्रेंस में कि प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, तो डिजाइनर को लेके आओ. तो डिजाइनर को बुला दिया. डिजाइनर को रोटोमोल्डिंग के बारे में कुछ नहीं आता है. उसको जबरदस्ती कर करके उसको डिजाइन करने बोल रहे हैं. उसको बेचारे को फीचर्स पता नहीं है रोटोमोल्डिंग के बारे में. वी आर टेलिंग इन हमारे भाषा में उसको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं हमको राउंडिंग लगता है, उधर पाउडर फ्लो होता है. It's all in bits and pieces. That's exactly, if you have somewhere in this group who grows up into a proper designer, an industrial designer, you can imagine the type of things you can design. Tremendous work can done right only starting with a water storage tank. I can tell you there are so many ways you can actually increase efficiency of just a water storage tank. Again, don't get tensed. It's a dinner speech, yeah? Please. Everyone looks at her tensed. Please don't take it. Everyone's going in a very nice way. I think the business is really growing well. I'm very happy about it. There are some things that I feel it's very important to do. Another important point which I feel is a very big
lacuna that we have is developing manpowers that we have. अभी इसके पास मैनेजर है, मैं ले लिया, मेरा मैनेजर उसने ले लिया, उसके पास से उसने ले लिया, उसके पास ऐसा ही वो मैनेजर घूम रहा है जो 10% 5% बढ़ा के इधर उधर घूम रहा है. उससे अच्छा why don't we think of actually developing someone, develop a workforce at different level which can really further increase our efficiencies, increase the industry to a very different level. One more point, I think I'm making you a little tensed. Everyone looks ऐसा एकदम. Sorry, my intent was surely not that. Just to tell you, most important thing, which I am trying to implement even in Henkel, India shining, India growing. Everyone talks about it. Everyone says कि नहीं अभी ये आ गया, अभी restriction आया, ये QCAs आ गया, ये FTAs आ गया, अभी restriction आ गया, उधर tariff लगा दिया. Whatever happens, India is growing at 6.5. Rest of the world is struggling around 3. Okay, there would be different reports talking different numbers, but we are surely above average globally. This is an opportunity for all of us here. We are fortunate to be a part, being geographically in this location. Take advantage of it. What could be the advantages one could take? Even companies, MNC companies that we have in Henkel. I said, let's take advantage of it to my president and top management. What could we do? What are the things that you all could do? अरे हम लोग तो छोटी कंपनी, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. हम लोग क्या अलग करेंगे? Look at doing partnerships. You have to look at some disruptive type of business models that could suddenly catapult your business into a very different type of structure or a trajectory. That's the time for all of us. Has any one of us, you all thought of partnering together? 2 processors, one sitting in Ahmedabad and one sitting in Bombay. Let's partner and let's together capture this particular market. That's going to help both of you all. वाटर मार्केट में आपको पर लीटर जाने की जरूरत नहीं है. मैं तभी भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ. आपको एक स्टैंडर्ड रखना है. BIS स्टैंडर्ड है, इट इज वॉलेंट्री. किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है. जब बंबू आएगा जोर से हालत खराब होगी, लेकिन बंबू आने की जरूरत नहीं है. We itself can adopt it. It's drinking water storage we are doing. Let's make it a point in this group where you can say that let's have this standard. Whatever happens, we are not going below this standard. And it's nothing to do with BIS or anything. It's basically not only talking good for the society, it's also good for the business. That's something that one really needs to look at. I feel that very strongly. I think this was some of the reflections I had. I had many which I have forgotten quite a few. But I think... no, that's absolutely fine. I've got a small chit made. Till then, any questions, any reflections? कशात? हां. टाक्या तुम्ही बनवतात, कसं असतं, कार्बन ब्लॅक हा सगळ्यात चांगला UV ॲब्सॉर्बर आहे. तुम्ही तो चांगल्या क्वालिटीचा UV स्टॅबिलायझर, कार्बन ब्लॅक घेतला, इट विल बी ॲब्सोल्युटली वंडरफुल. इट वर्क्स आउट व्हेरी नाइसली. खूप चांगला चालतो. हिंदी में अच्छा. तो कार्बन ब्लैक आप लेंगे जो 2.5 और 2.2 कितना है अभी लेटेस्ट 2 to 3% है, उतना यूज करेंगे, इट विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट. One more point I would like to say, there are different type of process measuring equipments like temp logger, many other things. I've also used it. I feel, okay, this is opinions, okay, again it's an opinion that I am giving. You might be right, I might not be right, but these are opinion. It's like doing ECG. आप रोज ECG करते हैं क्या? नहीं करते रोज ECG. आपको जब कुछ गलत लग रहा है, कोई तकलीफ लग रहा है, तभी आप ECG करते हैं. तभी आप करो. तभी आप, it's very important to understand what is peak internal temperature, parameters, what is the oven, at what temperature, what time I keep, how much do I air cool, how much I water cool. All these things become very important to have a crystallinity in your polymer to make it give it the right strength. वो सब एकदम सब बराबर है, लेकिन वो रोज मेजर करने की जरूरत नहीं. The reason why I'm telling you this, because when you are having this thing, अच्छा है, रोज मेजर कर सकते हो, recycle कर सकते हो. There is a cost to maintaining this as well. इसको मेंटेन करने में भी खर्चा होता है.
ये भी ज़्यादा होता है, विच एड्स अपॉन टू योर कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट. इसलिए डू नॉट डू things which will add on to your cost. Just make it as streamlined as possible. Make a perfect mold which will have perfect parting lines. It should come out smoothly. It will also give you the without any problems on the post molding operation. Finishing का जरूरत नहीं होता है. It's a tedious thing. Oh, hot air से gaps भरते रहो, vent and all those things. All waste of money. हमारे पास घर में शॉप फ्लोर पे वर्कर होते हैं, इसलिए हमको वो गिनते नहीं हैं हम लोग जो खर्चा हो रहा है वो. दिस इज ऑल एडिंग अ लॉट टू योर इनएफिशिएंसी ऑन द होल प्रोसेस. एक्चुअली थियोरेटिकली आप देखे जाए तो रोटो मोल्डिंग मोल्ड में मोल्ड रिलीज की जरूरत नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? आपके एलएलडीपी मटेरियल जब आप वाइडली जो प्रोसेस करता है उसका श्रिंकेज परसेंटेज कितना है? इफ यू डिजाइन अ प्रोडक्ट वेल, इफ यू हैव द राइट ड्राफ्ट, योर प्रोडक्ट विल ऑटोमेटिकली फॉल ऑफ फ्रॉम योर टूल. It doesn't need a mold release, but I still support using a mold release because you need to go for faster cycles, faster heating, faster cooling. So obviously you can't be giving that much time. So just efficiency of time and production, you need to give that mold release to assist your production rates. टेम्प लॉगर है क्या? अरे समझा क्या होता है. अलग अलग चीज़ें होती है. अभी मोल्ड में रोटो मोल्डिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि मोल्ड में मोल्ड लगाते हैं मशीन पे, दोनों एक्सेस में घूमेगा, दोनों एक्सेस में घूमेगा, उसमें अंदर पाउडर डालेंगे, उसके बाद ओवन में डालेंगे. जैसे हम लोग बनाते हैं केक बनाते हैं, वो मशीन में डालते हैं, उसके बाद कितना टाइम लगता है, हमारे हाउस वाइफ ने बराबर वो फिट किया होता है कि इतना टाइम ये ओवन को 220 डिग्रीज को इतना टाइम के बाद वो पकेगा. अभी आपका अलग अलग ज्योमेट्रीज होता है, अलग अलग ओवन होता है, अलग अलग साइज ऑफ मशीन पे मोल्ड लगते हैं, तो अंदर कितना टाइम लगेगा उसको पकने के लिए वो समझना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसके लिए एक डिवाइस आता है, जिन्होंने शायद काफ़ी लोग ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, जो आपको इंटरनल टेम्परेचर मॉनिटरिंग का एक डिवाइस है, जिसको आपको पता चल सकता है कि अंदर टेम्परेचर क्या है. और देन आप एक्चुअली मेजर करके आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इतना टेम्परेचर मेजर करने के बाद ये मटेरियल पकता है. 10 मिनट को ये टेम्परेचर में डाल दिया तो वो पक जाता है. तो एक अपने को एक आइडिया आ जाता है कि ये मोल्ड में अगेन देन इट्स अ वेरी फिक्स कॉन्फ़िगरेशन. ये मशीन, ये ओवन, ये हीटिंग रेट, ये मोल्ड में लगने के बाद इतना टाइम लगने के बाद अपना मटेरियल ये परफेक्ट हो जाता है. सो दैट इज़ एक पैरामीटर सेट होता है मटेरियल पे. नहीं तो आप क्या अंदाज से खेलते हैं, ये अभी इतना टाइम हो गया, थोड़ा पक गया होगा, खोल के देखो, टॉर्च मार के देखो हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो वापस डालो अंदर ओवन में. ये सब अवॉइड करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं. हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवन के अंदर या आदमी को फीवर आ रहा है तो थर्मोमीटर में इधर पकड़ता हूँ और बाद में इधर पकड़ता हूँ, तो कौन सा सही है? सही. ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो है बेसिकली इट इज एग्जैक्टली. धानु आप बोल दो ना यार, खड़ा रह गया. शर्माओ मत, बोल दो क्या बोलना है. it's exactly where the mold के अंदर you actually measure the temperature, actual temperature you get, precise control मिलता है, and that is where it gives you a much better monitoring of the whole process का understanding अच्छी तरह से मिल जाता है. तो वो एक अलग टाइप का advancements है which everyone should use, but it also depends किस चीज़ के लिए. अगर आप एक बार स्टैंडर्ड हो गया, प्रोसेस स्टैंडर्ड हो गया, एवरीथिंग स्टैंडर्ड होने के बाद अकॉर्डिंग टू मी एवरी साइकिल के लिए टेम्प लॉगर की ज़रूरत नहीं होती है. बट मेनी टाइम्स यू वांटेड टू मॉनिटर करने के लिए आई वांट टू सी इज देयर इज कंसिस्टेंटली मेड प्रोडक्ट्स, बिकॉज मेनी टाइम्स काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी इंसर्ट्स होते हैं जो असेंबली में जाते हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग पार्ट्स होते हैं जो असेंबली में जाते हैं. वहाँ पे एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे टेम्प लॉगर होना बहुत ज़रूरी होता है ईच साइकिल के लिए, ईच प्रोडक्ट के लिए, ताकि हर एक प्रोडक्ट आइडेंटिकल साइकिल टाइम में बना है. एक प्रोडक्ट था, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मूविंग. एनी अदर क्वेश्चंस ऑन टेम्प लॉगर? एनीथिंग टू ऐड? Thickness of polyurethane foam to the plastic when making an insulated container. I'll come to that, just a minute. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वेर यू टॉक ऑफ रोटो मोल्डिंग का, जो हाउ यू कैन प्ले अराउंड. जैसे आप खेल सकते हो एक्चुअली रोटो मोल्डिंग के साथ, खाली आपको समझना है कि मटेरियल का बिहेवियर कैसा होता है, क्या होता है. जब थिकनेस कम होता है, थिकनेस ज़्यादा होता है, श्रिंकेज कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है.
हमने एक शार्प बैटरीज के साथ हमने एक रिलायंस के लिए प्रोजेक्ट बनाया था. वो था बस स्टॉप शेल्टर, और बस स्टॉप शेल्टर था और वो बनाना था जामनगर कॉम्प्लेक्स के लिए 2 मीटर बाय 2 मीटर विच वॉज जॉइंट. तुम्हाला तो होताच तेव्हा. So 2 meter by 2 meter join करना है, and there were inserts, screw inserts which were fitted onto the frame, which were apart by 1.5 meter से अलग था, and they had to match with the framework. So इतना precise होना चाहिए था. So we had to really make sure that post molding shrinkage is exactly matching to that frame. So it was very important to decide वो mold, because the product was also very thick. It was a big product, thick product. कर्वेचर में क्या टाइम पे उसको बाहर निकालना है, उसको एयर कूलिंग कैसा करना है, क्या फॉर्म में रखना है ताकि वो एग्जैक्टली जाके उस पर बैठे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आपको समझना जरूरी है, जो बिकॉज उसमें, और ये चीज़ों के साथ आपको खेलना है. ये आपको वही बोल रहा, दीज आर ऑल, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये अभी पॉलीइथीलीन मटेरियल जब भी प्रोसेस करेंगे वो चिपक जाता है, मोल्ड पे चिपकेगा, फ्यूज होगा. उसके बाद आप जब राइट रेट ऑफ कूलिंग देंगे तभी वो मोल्ड से छोड़ेगा. अगर आपने कहाँ पे भी इंसर्ट्स और उसका रुका हुआ हो गया तो वो फिर बुरी तरह फंस जाएगा और वो निकलना मुश्किल हो जाएगा. फिजिकल एंकरेज और ओवर हीटिंग से आपका मटेरियल जलने के बाद, कार्बोनिल आयंस आने के बाद मेटल को चिपक जाएगा. अगर ज़्यादा चिपक गया तो आपका जो मोल्ड रिलीज है उसको भी लेके निकल आएगा. तो ऐसा होता है. तो इट इज बेसिकली इट्स अ स्किल एंड यू विल बी एबल टू मास्टर इट. उसको मास्टर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है. ओनली थिंग आपको समझना जरूरी है. इधर उधर देखने से, बिकॉज आपका मशीन उसके मशीन से बहुत अलग होता है. टिल यू स्टैंडर्डाइज मशीन्स, एक स्टैंडर्डाइज, अभी रोटो मोल्डिंग में अभी भी मेरे को लगता है स्टैंडर्डाइज नहीं हुए. जब आप मैन्युफैक्चरिंग से मशीन लेते हैं तभी काफ़ी स्टैंडर्डाइज होते हैं. यू गॉट मशीन्स विच have got standard parameters like what we have Reinhardt, or even other machines. They have all got parameters which are set, which can be set, and you got parameter cycles. अगर ये नहीं होगा then आप दूसरे के parameters लेके अपने parameters नहीं set कर सकते. बहुत ही अलग चीज़ें होते हैं. Molds made by you and mold made by someone else which is fabricated will behave differently. They will behave very differently. So you need to set the parameters on your machine itself. Stickness, yes. So coming back to stickness, very important problem which I feel, I don't know if, do you have this problem of sticking of polyurethane to polyethylene? किसको प्रॉब्लम है? किसको है प्रॉब्लम? तो क्यों प्रॉब्लम है? और क्या हो गया अगर छोड़ दिया तो क्या होता है? हाँ, एयर गैप हुआ तो क्या हो गया? आपने अगर प्यू फोम भर दिया, कैनन मशीन से भर देंगे, उससे भर दिया, उसके बाद पैक हो गया, अच्छा हो गया इंसुलेटेड कंटेनर, फिर 6 महीने के बाद अगर छोड़ दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ, इंसुलेशन प्रॉपर्टी कम हो जाता है. पैलेट में डाल दिया, अगर वो छोड़ दिया तो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, पंचर ज्यादा हो जाता है. सो व्हाट कैन यू डू? हैव यू ऑल थॉट ऑफ अ सॉल्यूशन? This is, sorry? You need a tie layer. How do you incorporate a tie layer in a rotomolding process? So I was just thinking about it. I was just speaking to Mr. Danu Patel. Is we have got a water-based adhesive, which is very good for polar substrates, and we would like to try it out. Make a rotomolding insulated container, spray it before you actually inject the polyurethane. And let's see if it works, because if it works, it will be a very user-friendly, very much possible for a rotomolder to use. At the same time, there could be much better adhesion that you could get. This is a product which is used for footwear and many other products, so we have got a ready solution. I felt that product would really, it's room temperature, water spraying onto a rotomolding thing should go too well. Let's try it out. So there are something that we need to constantly, there are obviously various other ways of doing it. Where you actually also add a coarse powder into your rotomolding, which gives you a rough surface where there is physical anchorage between these two, but that is not the best solution, but still it's a solution. Yeah, so that's what it's about. My feeling, my reflection. I think congratulations to you all. Wonderful going. I think still a lot of work to be done. I can say that I think since
since we were discussing in 2007, people have really moved ahead. There's a lot of materials that come in. I think indigenously we are having a lot of materials, ready materials. General concept is, if you're a rotomolder, concentrate on only rotomolding. If you're a powder maker, you just concentrate on powder. It all depends on your business expertise and convenience. If you're a machine manufacturer, let the machine manufacturer make the machine. Don't try to make a machine. These are some things which we are all graduating out of, and I see that there are a lot of standardization coming on machines, materials, which is a great convenience. I think it's a convenience where the actual rotomolder can concentrate on his rotomolding, really looking at how we can design a product. What we really strongly miss, I feel, is a good, hardcore, industrial rotomolding designer, and someone who could really make wonderful molds. Cast aluminum molds is something which I feel is a missing link that we have. That's it. I think I'll close the speech, the so-called dinner speech, and let's relax and have a nice cocktail dinner. Any questions? Any questions? Yeah. No, it will be a spray which it will be in very small quantity. It will not be in much quantity. It will be in very. If you use this cross-linked polyethylene material, That's what I'm saying. I'm saying, see, 1997 से लेके 2007 में cross-linkable material, single foam molding. Then you talk of single shot foaming तो हो गया. Then we talk of polypropylene molding, plastisol, cross-linkable, सब कुछ हो गया करके. उसका application नहीं है. The very fact you're cross-link जाएंगे आप, उससे surface tension कम ज़्यादा होने वाला नहीं है. You are not going to increase the adhesion between the polyurethane. Don't try to use materials which are difficult to process. Don't use materials which are going to add on to your cost. They're just going to add in cost. Polypropylene, लोग बोलते हैं कि polypropylene material आपको वो impact नहीं मिलेगा. Polypropylene rotomolding का grade है क्या? Back then, Repol 120 MA, standard injection molding grade, 12 MI grade of Reliance Industries. I had rotomolded into a ball, and I could actually play cricket with that without any issues. But pulverizing polypropylene material will be very expensive. It will be nothing less than 120 rupees a kg or more than that. More than that. So where do you need? Now, can you make rotomolding polypropylene? Yes, you can. Where is the need? Where is the application? I don't see any application which could really justify a polypropylene, a polycarbonate, a ABS material that can be rotomolded. We can surely do or develop a grade for rotomolding. That's not an issue. But it doesn't justify. see here in the market, there is Bondiram, SK Functionals, Orevac. They are selling this cross-linked polyethylene-based adhesive resin. So that adhesive resin goes for this aluminum composite panel. Okay. So in case of aluminum composite panel, what is happening, inside, in the middle layer, it is a totally recycled material, Okay. isn't it? 95% recycled material, 5% LDP Reliance material. But in both the side, there is aluminum panel. So that panel we need to see that. I think let's so look that at that. panel is adhered by adhesive film, and that is polyethylene cross-linked base adhesive material. Okay. So that also can be used. We can work on that. Good point you had mentioned. Just last point I was very tempted to ask, recycling. Recycling polymer. Recycle कौन use करता है? Scrap कौन? आप लोग recycling कौन use करते हैं? कोई नहीं use करता है. कोई नहीं करता है. अरे it is not bad. It is not bad to use recycle. Huh? अरे it is not bad. Why are you feeling that way? It is not. हाँ, in-house scrap तो use करना चाहिए. करना चाहिए because if you are, but बहुत important point ऐसा है कि अगर आप प्रोसेस उसको बराबर कर रहे हैं, उसको जला रहे तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन उसको बराबर प्रोसेस कर रहे हैं, मटेरियल को जला नहीं रही है, तो इट इज अ वेरी नाइस मटेरियल दैट यू कैन यूज अगेन.
If you are buying the milk pouch material, which is the LDP 0.25 MFI material and which you are trying to rotomold, God help you. It is really going to be a mess. You need to work with material which is suitable for the rotomolding process. Obviously not going into too many details on what a grade is for the rotomolding, but it's important to for recycling aap use karo. It is not bad to use recycled material. Only when you burn that material, that is where it is bad, not only in properties, but it also gives out harmful ions, which is not good for health. So, Jitendra, in the North India, there are a lot of this rotomolder who are using this recycled material in the middle layer, or you can say some of the layer without this outer and inner. So we have the sample here also, one can see. see, what happens is, yeah, that's one way of getting rid of, that is a very good, effective way of using multi-layer. Yes. Multi-layer. But generally, how many of you all can make 7-layer tanks? आप मेरे को बोल सकते क्यों बनाते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ. It is actually showcasing that you have got very precision control on the process. बहुत अच्छा process है आपका control में, but the application doesn't need it. हाँ, मतलब आप दिखाते हैं 7-layer tank बनाता हूँ. It's a very good achievement by you. I would say 3-layer, 5-layer. ये बनता है flexible packaging में. हाँ, मतलब layers किसके लिए होता है? You got insulation, you need black for algae formation inside, 3 layers, 2 or 3 layers. That is got very functional for a rotomolding product. जो 7-layer और 5-layer होते हैं ना, वो flexible packaging में होते हैं और सबका एक अलग अलग फंक्शन होता है. एल्यूमिनियम होता है, नायलॉन होता है, पॉलीइथिलीन होता है, प्रिंटिंग होता है. वो एक अलग एप्लीकेशन होता है जिसमें 7 या 5 लेयर लगते हैं. रोटोमोल्डिंग में मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया. नहीं, बट मार्केटिंग क्या स्ट्रेटेजी होगा? अगर मैं गाड़ी देता हूँ आपको 10 टायर वाली, तो लेंगे क्या आप? इसको क्या मार्केटिंग बोलेंगे आप? हाँ, फिर anyway, so I think the best dinner speech would be to stop as soon as possible so that you can enjoy dinner. Thank you very much. Thank you very much, sir. Check. Would like to request you, sir, to please come back on stage. Would like to request Mr. Sameer Biswal, HPCL Mittal Energy Limited, Delhi, requesting you, sir, to please come up on stage to present a memento for Dr. Jitendra Kapadia. Come on, you can put your hands together now, a bit louder. Thank you very much.